गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आज की क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये मालूम है कि हमारा नीट एग्जाम जो है वो जल्दी आने वाला है, तो इसीलिए अब जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिस हिसाब से कवर करेंगे वो विल कीप इन माइंड स्मार्ट स्टडी एंड देन कवर द टॉपिक्स। स्मार्ट स्टडी एज एन स्टडी लेस बट गेन मोर आउट ऑफ द स्टडी टाइम दैट यू हैव डन और यू हैव यूटिलाइज्ड। ओके, तो आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग बहुत अच्छे से ये समझ गए इसके नाम के साथ कि दिस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस और दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच very well deals with the study of the origin, reactions, transports, counteractions, and side effects of chemical species. Okay, and now any undesirable effect, क्योंकि केमिस्ट्री है, दैट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शंस होंगे। अब अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा सिस्टम पे, इफेक्ट ऑन सिस्टम। मैंने आप लोगों को बोला था कि सिस्टम को हमेशा याद रखिए केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में सिस्टम का मतलब ये हो जाता है वो सराउंडिंग इसके जिसमें रिएक्शन होता है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। ओके, नाउ कमिंग बैक, इफेक्ट ऑन द सिस्टम could be positive or negative. Now, any negative effect due to the chemical reactions is undesirable for the human beings, plants, or animals. When I say negative effect can be anything like loss of oxygen, loss of O2, widening of ozone hole. Now, any of these kinds of negative side effects arising due to the chemical reactions occurring in the environment is termed as pollution. If there is any positive side effect, then we are good with it, because anything positive is good or beneficial for the organisms. However, any negative side effect arising due to the study of the chemical species in the environment, any negative side effects are always undesirable, and that is termed as the pollution, or that phenomena is termed as pollution. Now, this is one more thing. Substances which cause pollution are termed as pollutants. They can be solid, liquid, or gas. So, students, we are very well aware that pollutants can be of any state of matter, solid, liquid, or gas. Undesirable effects arising out of the chemical reaction between the chemical species is termed as pollution, and the substances that cause pollution are termed as pollutants. Now, this is one portion of the environmental chemistry, or the effect or the study of the environmental chemistry. Now, going back to the question of pollution in the environment, we have been talking a lot about environmental pollution. So, keeping that in mind, we must understand that environmental pollution is a study of the pollution at the tropospheric and stratospheric level. Now, what we mean by this is atmosphere is divided into many parts. However, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, as we continue to move up above the earth, the air quality is thinner. In fact, quality से बेहतर बोला हुआ air density is less. So, when the air density is less or air quality is thinner, the pollutants find it hard to resist that portion. However,
Due to this, the atmospheric pollution is studied at the following levels: tropospheric level and stratospheric level. These are two levels wherein mainly we use air for breathing. Okay. You must have heard न्यूज में हो या आर्टिकल्स में हो या इंटरनेट पे हो या व्हाट्सएप पे हो that during winter air quality worse or worsens. Okay, the reason of this is जब winter में major okay before we go to the air quality in winter, let me speak about the greenhouse effect and global warming. Due to the dust blanket, dust blanket between the earth and the sun, the majority of the heat that sun sends to the earth is absorbed by earth, and so the temperature increases gradually. Okay, so this phenomenon is global warming. Now once we come to the greenhouse effect, the greenhouse effect is also negative greenery greenery के लॉस होने के बाद the earth absorbs heat, and because of that the temperature is rising. So that is also not good for our environment or for our atmospheric zone. Okay, now coming to the other side effects. We must have heard acid rain के बारे में. Acid rain, जब acid रेन तब होती है जब वाटर रेन की फ्रीक्वेंसी जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है. ओके, नाउ उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड साइड इफेक्ट्स. बच्चों, ओजोन का हमारे इसमें काम मेनली क्या होता है? ओजोन की वजह से हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन से वो कम होते हैं, उसकी इफेक्ट हमारे पास लिमिटेड होती है और साथ ही साथ उससे हमारे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. अब आप बोलोगे कि सर अल्ट्रावायलेट रेज आती क्यों है सन से? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सन हमारे से इतना दूर है, उसका जो लाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे कैन बी डिवाइडेड टू अल्ट्रावायलेट, नॉर्मल एंड इंफ्रारेड. तो तीन टाइप की फ्रीक्वेंसीज पे लाइट हमारे पास पहुंचती है सन की, और लाइट के साथ हीट एनर्जी को ट्रांसफर होना नॉर्मल है. तो जो रेंजेस हैं वो है अल्ट्रावायलेट, नॉर्मल रेज एंड इंफ्रारेड रेज. तो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ. अल्ट्रावायलेट रेज के कारण हमारे पास बहुत सारे स्किन डिजीजेस होती हैं. कभी कभी व्हेन इट अफेक्ट्स द ब्रेन इट कॉजेस सर्टेन ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस. सो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं या ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको हम तक पहुंचने से रोकता था ओजोन गैस. ओजोन गैस इज द आइसोट्रोपिक हायर वर्जन ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन में नॉर्मली 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, बट ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और कार्बन हैलाइड्स, ये जो ओजोन लेयर्स हैं ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं. डिप्लीट होने से मतलब क्या है? CFC जब हवा में ऊपर जाती है और वो जब ओजोन गैस से कंबाइन करती है तो ओजोन गैस ब्रेकडाउन हो जाता है O2 प्लस O में. अब एक बार मेरा ओजोन O2 प्लस O में ब्रेकडाउन होता है, विच मीन्स कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे जब ओजोन की कमी हो जाती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो केमिकल है जो नॉर्मली हमारे जितने भी कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज हैं या कुछ हद तक पेपर फैक्ट्रीज है उनसे लिबरेट होती है. सो आप समझ रहे हो कि कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज से लिबरेट होती है तो हमें वी शुड स्विच ओवर टू
नेचुरल कॉस्मेटिक्स ग्रेजुएट सो दैट कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेडिएशन मतलब यूज ना हो और वो हमारे एटमोसफेयर को खराब ना करे। ओके, अब लास्ट पॉइंट इसमें आता है मेरा वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये है बच्चों, जो बायोलॉजिकल वेस्ट जब पानी में बहाया जाता है तो जो वाटर खराब होता है, और जब हम उस सेम वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उससे मेरा सॉइल भी पोल्यूट होता है। अब वाटर पोल्यूशन के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। वाटर पोल्यूशन इज COD, that is chemical waste, biological waste, untreated sewage water. Okay. केमिकल वेस्ट, आप लोग को याद होगा कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस करा था कि इंडिया में एक फैक्ट्री स्टार्ट हुई है बिहार के स्टेट में, जो हमें ये रिसर्च चल रहा है वहाँ पे कि ईथर हाउ कैन ईथर बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सो उस रिसर्च उस प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि आसपास के जो घर हैं या जो धरती है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैविंग देयर बीइंग सीन देयर नियर बाय। वहाँ पे एक ह्यूमन पॉपुलेशन रहता है, एक स्कूल है, हॉस्पिटल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ सेटल है, व्हाट दे आर फाइंडिंग और व्हाट दे सी नाउअडेज इज, अगर वो अपनी गाड़ी को बाहर रात भर के लिए छोड़ते हैं तो उनकी गाड़ी के छत पे देयर इज अ डीप black color blanket which needs to be cleaned up every morning. This is one effect that they are seeing. Second, जो ये वेस्ट उस फैक्ट्री से बाहर आता है, उसके जो पानी है वो अगर आसपास की जमीन पे पड़ रहा है तो जमीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घटती जा रही है। सेकेंड साइड इफेक्ट। थर्ड साइड इफेक्ट जो वो लोग देख रहे हैं, उनके बच्चों को या एडल्ट्स को भी स्टमक रिलेटेड एंड लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी होनी स्टार्ट हो रही हैं। So बच्चों, this is a very classic example wherein the factory is trying to do something good and noble for us. However, the side effects have been ignored because of this good noble deed. So keeping this in mind, अगर हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर हम कुछ सोसाइटी के लार्जर ग्रुप के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी और की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। So what chemistry says is, before the release of these biological waste or chemical waste in water, we need to treat them, which means कि हमारे हर फैक्ट्रीज को जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी एक होना चाहिए। दैट एज अ टीचर आई कैन ओनली रिकमेंड कि दैट शुड बी वन ऑफ द major criteria based on which these kind of factories should be allowed to be set up. Okay, so that was the last point on the pollution or in environmental chemistry. So now study well, and we'll meet next time for a new topic that will be covered at a faster pace as well. If you have any concerns, let us know. Thank you, students.